So, hello everyone. My name is Adarsh Banka, and I'm going to teach you mathematics. And the first topic we are going to start is called progression. It is also called sequence and series. So, basically, there are three terms: sequence, series, and progression. I will add one more to this, and that is called sets. So, now we have these four terms: set, sequence, series, and then progression. All these are basically different things which these days we use them invariably. किसी को भी कुछ भी लिख देते हैं, but actually they are different. Now how they are different? So what do you mean by sets, or you can say in this case set of numbers? तो set of number का मतलब होता है कि numbers हैं और किसी भी order में लिखे हुए हैं. For example, I will say a set 1, 5, 1 by 2, 9, 7 and 11. So this is called set of numbers. And then we come to sequence. Sequence और set में ज़्यादा difference नहीं है, सिर्फ order का difference है कि अगर एक order में लिखोगे and make sure it is not pattern नहीं बोल रहा मैं, order. तो ऑर्डर में लिखेंगे, सो आई विल राइट 1, 5, 1 by 2, 9, 7 and 11. What do you see? ये तो दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, बिकॉज दिस सेट इज एब्सोल्युटली इक्वल्स टू 5, 1, 9, 1 by 2, 11 and 7. बिकॉज वी नो दैट कि अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो सेट्स पे कोई डिफरेंस नहीं आता है. लेकिन इफ आई से सीक्वेंस दिस, सो दिस सीक्वेंस विल नॉट बी इक्वल टू दिस सीक्वेंस. तो सीक्वेंस का मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में होना चाहिए, एंड दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सीक्वेंस कि देयर शुड बी एन ऑर्डर. सेकेंड डिफरेंस इज सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं या वेन डायग्राम के हिसाब से लिखते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, बट सीक्वेंस में ये कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे. दिस विल बी सिंपली रिटन इन अ लाइन सेपरेटेड बाय कॉमास. नाउ लेट मी टेक वन मोर सीक्वेंस एंड दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and so on. Let me write one more sequence: 1, 4, 9, 16, 25 and next will be, yes, you guessed it right, that is 36. ये मैंने नंबर्स का स्क्वायर करके लिखा हुआ है. लेट मी राइट वन मोर, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13. नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म? 15 will not be the case. This is not 15 because these are not all odd numbers. ये alternate कोई odd numbers नहीं है क्योंकि यहाँ 2 और 3 है. 2 is not odd. 7 के बाद 9 नहीं है. So what are these numbers? So take a break, think of it and then start again. And next number will be 17. Did you get it? So actually these are prime numbers. Actually these are prime numbers. तो 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद आएगा 19, फिर आएगा 23 and so on. Let me write one more. 1, 1, 2, 3, 5. You got it or not? Okay, so again take a pause and think of it. What would be the next number? Some of you may have guessed it. If you know it, अगर आपको पता है ये क्या है तो ही आप गेस कर सकते हैं. Otherwise, let me help you. The next term will be 8. Next term will be 13, and so on. And these are basically, this is Fibonacci sequence. Fibonacci sequence के बारे में आपको पता होगा कि every 2 नंबर, जब 2 consecutive नंबर को ऐड करते हैं तो आपको थर्ड नंबर मिलता है. 1 और 1 को ऐड किया तो 2 मिला, 2 और 1 को ऐड किया तो 3 मिला, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 मिला, 5 plus 3 8, 5 plus 8 13, 13 plus 8 21, 34 and so on. All these are basically sequences. तो
अब एक हमारे दिमाग में क्या होता है कि नहीं, सीक्वेंस में तो ऑर्डर होना कंपल्सरी है, पैटर्न होना कंपल्सरी है. इट इज नॉट लाइक दैट. इफ आई वांट आई कैन राइट 1 pi minus 2 by 3 e square root 2 and 7 and so on. I can write these also. This is also a sequence. तो sequence का मतलब numbers separated by comma written in a row. That's it. And now comes series. Series क्या होता है? Series is basically a sequence जिसमें एक छोटा सा चेंज आएगा and that will make this sequence a series. So I am going to convert this sequence into series and that will be, wait for it, plus 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 plus. This has become series. So red color से मैं लिख देता हूं, दिस इज एक्चुअली अ सीरीज. जब हम रेड कलर यानी कि प्लस साइन यूज करेंगे, नाउ दिस विल बी प्लस 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 प्लस. दिस इज अगेन अ सीरीज. तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर हो, अगर हम उसमें प्लस प्लस साइन लगा देते हैं तो दैट बिकम्स अ सीरीज. सो आपका सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया और सेट हो गया. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोग्रेशन. So what is a progression? Progression is basically a sequence of numbers जिसमें आप nth term का formula लिख सके. A sequence of numbers in which we have formula for nth term. So do you think that you have a formula for nth term in this? Can you tell me what would be the next term? Can you tell me nth term of this? Can you tell me nth term of all these? So let's take it one by one. In first one, there is no pattern, there is no rule, and so we cannot write its nth term. In second, if you see, तो first term 1 है, second term 2 है, third term 3 है. तो ये बताओ nth term क्या होगा? So nth term होगा n. तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला है दैट इज n. इसके nth टर्म का फॉर्मूला बोलो. सो फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर, 10th टर्म 10 स्क्वायर, nth टर्म n स्क्वायर. कैन यू राइट nth टर्म ऑफ दिस प्राइम नंबर्स? एक्चुअली वी कैनॉट राइट nth टर्म ऑफ प्राइम नंबर. इसमें एज सच कोई पैटर्न नहीं होता है. फिबोनाची, फिबोनाची में कैन वी राइट nth टर्म? एक्चुअली नो. हाँ, वन थिंग वी कैन डू, कि इसका जो nth टर्म होता है वो n-1th टर्म और n-2th टर्म का सम होता है. बट फॉर दैट वी नीड द प्रीवियस टू टर्म्स. एंड सो nth term directly you cannot write, so this is again not a progression. What about the last one? It is also not a progression. So progression का मतलब एक sequence of numbers है जिसके nth term का formula. And this is the difference between set, sequence, series and progression. I hope you got it. Thank you.